देखना आ रहा है अभी? हाँ सर, यू लाइव नाउ। ओके ठीक है. Good morning everyone. Now voice is fine to all, right? I hope the voice is fine to all. And good morning Anita. तो टेक्निकल इश्यूज जो टे लेट हो गला सेशन स्टार्ट करिवारे. एंड आज जो सेशनटा रहिबो आपण मानकर, दिस सेशन इज विदाउट फेस सेशन रहिबो. As I am taking classes away from the city, right? As I am taking away from the city, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିବ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ତ ଆମର ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଆମେ ନେଇଥାଏ ଫେସ୍ ବାଲା ସେମିତି ନେଇଥାନ୍ତି. ତ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଦେନ୍ ଆମର ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କ୍ଲାसेସ୍ ହେଇଥାଏ we will have that normal classes, right? Just it's a matter of 1 and 2 days only, then we will have like as ଯେମିତି as usual ଆମର classes ହେଇଥାଏ, then we will have the same class. Okay, चलो फिर तो फास्ट वाला क्वेश्चंस को आम टिके जीवा. फास्ट क्वेश्चंस हियर यू कैन सी द फास्ट क्वेश्चन है. ये आपण मैंने देखिपारे फास्ट क्वेश्चंस आपणकर कमेंट मध्य समस्त करें, राइट? देखुचे आपण मानकर, राइट? कमेंट भी देखिपारे आपण मैंने समस्त कमेंट मध्य देखिपारुछि. द फास्ट क्वेश्चन देखिपारे, द पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम? देखा आंसर कौन दो तो मैंने. गुड इवनिंग एवरीवन, लकी एज वेल. जय जगन्नाथ समस्त को. समस्ते टी कह दियो कि जॉइन करदे, बाकी मैंने टी जॉइन करदे, राइट? ताकि सेशन बहुत बढ़िया जीवो एंड बाकी मन को टी जॉइन करने कही दे था. लेट द अदर्स टू नो अबाउट द सेशन दैट द सेशन हैज स्टार्टेड. ओके बी फास्ट. जदि आम ये जो ऑप्शन को देखा ना, जस्ट ए मिनिट. हाँ, जदि आम ऑप्शन को देखा, इफ आई गो इनटू द ऑप्शन, राइट? तो ऑप्शन को जदि मु जीबी, द ऑप्शन रे जदि आम देखा, राइट? तो ऑप्शन रे तुम जाइए जमती आर्क एंड रॉक. तो ऑप्शन रे आम देखिपारे कि देयर इज आर्क एंड रॉक, गोंडवाना रॉक, डेकान ट्राफ्स, विंध्यान्स, सैंडस्टोन्स. तो जदि आप ऑप्शन को देखिए ना, तो आर्क एंड रॉक हमको देखा जाए बिकॉज दिस इज द व्हाट बेसमेंट ऑफ रॉक ऑफ इंडिया. जदि आमर जो पेनिनसुला पार्ट अच्छी, तुम जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द बेसमेंट रॉक. तेणु आर्क एंड रॉक हूँ द ओल्डेस्ट आम कह रॉक ऑफ द अर्थ सिस्टम आज ऑफ नाउ, जार एज जदि कह इन द बिलियंस, एंड दैट इज वाई दिस आर्क एंड रॉक इज द पार्ट, राइट? से कह पेनिनसुलर ऑफ इंडिया मेनली कंपोज्ड ऑफ. And this is also, that does not mean it has, the question has not specified whether it is the surface of that is what peninsular of India, or this is the bottom, or this is the, any particular region is not been classified, and that is why the arc and rock would be answer. Gondwana, yes, there is also Gondwana because Odisha वगैरह Gondwana देखा जाए, and Gondwana जो sedimented rock टा अच्छी तमरो, that is also host of minerals like the coal.
सेमती आम डेकान ट्राप महाराष्ट्र देखा विंध्यान सैंडस्टोन आमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ये देखा दैट मीन्स ऑल वुड बी द आंसर। तो आपन कौन हो ऑल विल बी द आंसर। तो आज गोटे दिन दी दिन टॉलरेट करिया पड़ो जे एमसीक्यू सेशनटा मु नौछि सेटा को एथिपैन टॉलरेट करिया पड़ो जोटा मु कहिथिल तम मानकू कि कौन पई बिकॉज जो मु कहिथिली कि आज आई एम टेकिंग द सेशन अवे फ्रॉम द सिटी जेहेतु मु सिटी ठू टिके दूर नहीं कि राइट से तु ये आसीज तुम मानक डन। तो ये बी तो इट वुड बी ऑल विल बी द आंसर। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑल। आंसर विल बी ऑल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हम जीवा। नाउ वी विल कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन को जदि आम आसवा से कही सेकंड क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सॉइल्स एंड देयर डोमिनेंट क्रॉप एसोसिएशन एंड देयर डोमिनेंट क्रॉप एसोसिएशन को जदि हम देखिबा देन वी विल हैव अदर क्वेश्चंस एज वेल। बाकी क्वेश्चंस को भी आमे जीवा। तो फास्ट टू क्वेश्चंस को आमे सार देला परे आमे बाकी क्वेश्चंस लाइक आमे जीवा राइट। देन रेगुर सॉइल से कुछ रेगुर सॉइल इज फेमस फॉर द कॉटन। आलुवियल सॉइल व्हीट हो पारिबो। लैटराइट सॉइल टी हो पारिबो। रेड सी राइस हो पारिबो। तेबे देखिबा आमे कोन हो पारिबो। ट्राई कर तुम मैंने देख लैटराइट सॉइल जदि ये देखी ना मु कहबी मोर तो कजर रही कजर को तुम मैंने देखिपो से देखिपु समस्ते अनिता लकी दास इज इट विजिबल माय कर्जर है ना। अच्छा ये जदि गोटे जिनस आम देखा व्हाट इज द आंसर कि से कह देख रेगुर सॉइल तो समस्ते जान कि रेगुर सॉइल दिस वन इज व्हाट ये तो समस्ते जान कि रेगुर सॉइल इज फेमस फॉर द कॉटन है ना। रेगुर सॉइलटा कौन कॉटन पे फेमस। आलुवियल सी रे भी व्हीट राइस ये सब करुचे दैट इज आल्सो करेक्ट। दैट इज आल्सो करेक्ट ना। लैटराइट सॉइल कौटी होता है देख लैटराइट सॉइल कौटी होता है द रीजन वेयर इट वुड बी ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई कंडीशन एंड द रीजन वेयर वुड बी हाई रेनफॉल आउ जो हाई रेनफॉल होची एंड ड्राई जदि आम कह साधारणतः आमर जो टी कल्टिवेशन होता है सेटा टी पे साधारणतः लोमी सॉइल इज बेटर राइट बा आम कह माउंटेन सॉइल or you may say mountain soil or it would be mountain soil and that is why so that laterite soil is not favorable right. The laterite soil is not favorable that will support like coffee that will but somehow जदि मु कहबी ना पूरा भी मना करी हबो नहीं कारण एमिति आम कौन सॉइल को मना भी करि परिबन कि टी हबनी। आई वुड से दीटा आंसर तो कहीपर दिस इज डिपेंड अपन द एग्जामिनर को केमती परसीव करूँ राइट। जदि मु कहबी तो कह सार लैटराइट सॉइल रे कहीं टी हो पारनी देख एनी सॉइल टी कैन बी ग्रोन एनीवेयर हाँ जदि से लैटराइट सॉइल हो पार तो आई वुड से गो फॉर द ऑल जेहेतु मैंने जाऊच 3 पेयर भी जापर राइट अदरवाइज तुम्हें ऑल पेयर्स भी जापर ऑल भी जापर दिस इज डिपेंड अपन द एग्जामिनर से केमी परसीव करूँ बट आई वुड बिलीव गुड मॉर्निंग शत्रु दिस सेशन वुड बी विदाउट फेस मु कही एंड आज आई एम आई फ्रॉम द सिटी टी रिमाइंड कर दूसरी आपण मानू सो दैट आपण मैंने कोऑपरेट करेंगे एंड आई वुड से दो टी इज नॉट लार्जली कल्टिवेटेड इन द लैटराइट सॉइल बट आम ताको मना भी करें हाँ डोमिनेंट क्रॉप जेहेतु से कही ना जेहेतु आंसर जदि आम क्वेश्चन को देखा आज इट हैज मेंशन दैट द डोमिनेंट क्रॉप सो दैट इज वाई द लैटराइट सॉइल इन द मालाबार कोस्ट दैट इज हैविंग द डोमिनेंट इज द कॉफी नॉट टी। सो से जदि आम वर्ड को देखा डोमिनेंट वर्ड को देखा ना देन इट वुड बी आंसर 3 बाकी जदि मु डोमिनेंट वर्ड को काटिदेवी ऑल विल बी द आंसर। Next we will comes to which of the following river does not flow through the Rift Valley? Question number 3. Question number 3. Now comes everyone. Question number 3.
Which of the following river does not flow through the Rift Valley? Whether it's a Tapi, it's a Narmada, it's Mahanadi, it's Damodar. Try it all, Satru. It's a see कौन कौन देखो questions number 3 does not flow through the Rift Valley. So which of the question number 3? I am going through the question number 3. Exactly, I have forgot to get my pencil so that write करिया पे मुझे इतने लिखी परूनी. Otherwise, I am also trying because for the first time I am taking classes out of city. Right, I will have something arranged. Okay, don't worry. Ha. If you बुझिपार्नु त Narmada and Tapi, they are the flowing through the Rift Valley because of what? Vindhya and the Satpura. Because of Vindhya and Satpura, Samir also coming. Good morning, Samir. देखो मो कहा था तापी एंड नर्मदा 100% फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली बट क्वेश्चन तुमको कह 3 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली तेणु नर्मदा तापी तो बिल्कुल भी हेनी ताकू भूली जाओ रहा सी एंड डी दामोदर ऑल्सो फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली एंड एठी जदि आम देखा सो आंसर वुड बी महानदी द राइट आंसर तुम मैंने देख समझते राइट लैटरेट सॉइल आसाम रे एते देखा जाए बेसी तुमको आसाम रे भी देखा जाए बट साधारणतः आम कहबा ये तुमको देखा जो कोठी वेस्टर्न कोस्ट केरला कर्नाटक दैट रीजन जोटा शत्रु कहूछ तेणु सी सो महानदी विल बी द राइट आंसर देन कम्स टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आस ट्राई कर क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ वाला क्वेश्चंस Question number 4 coach with reference to the monsoon winds in India, consider the following statement. Right? Consider the following statement. जदि हमें following statement को सीखोची, the burst of monsoons is the burst of monsoon is more sudden and violent on the western coast than in the northern plain. The retreat of monsoon is faster in the western India as compared to the eastern India. And the third one, the northeast monsoon contributes significantly to the rainfalls in the Tamil Nadu. Right, again I repeat question number 4, that the burst of monsoon is more sudden and violent in the western coast than the northern plain. The retreat of monsoon is faster in the western India as compared to the eastern India. The northeast monsoon contributes significantly to the rainfall of Tamil Nadu. आंसर दिए समझते 4th नंबर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जगन्नाथ. हाँ, without face session this session is going right. तो जदि एथरे तुम आंसर देखियो ना जमती 4th नंबर सी देछि कि शत्रु अनीता मेजोरिटी आम कह समीर ऑल्सो गोइंग फॉर द सी बट मो कहवा कथा टिके क्वेश्चन को पढ़िले ध्यान से जानीपर इट वुड बी व्हाट ऑल, इट वुड बी ऑल. 4th नंबर ऑल हम कारण आम जाचे कि जो मॉनसून ब्रस्ट कौटी हुए केरला कोस्ट रे दैट मीन्स इट वुड बी मोर सडन इन व्हाट in the western coast, that one is known to everyone, right? That good morning Lakshmi, that one is what known to all. That means question number 4 the game is right. As this one is known to everyone, that question number 4 option 1 is correct, because in the northern plain से कही तुमको northeast भी कही नहीं, northern plain there is no such of event you may not have heard anywhere, or I also believe that you
may not have gone through any books where it is been written that the northern plain receive the burst of monsoon एमती तो किसी नहीं. Then se kହୁଛି retreat of monsoon. जो retreat of monsoon होता है that starts from the northwestern part of India. That means I would say Punjab, Haryana and Rajasthan. যদি তোমাকে পচারে monsoon কোঠু retreat start हुए, that to be the state of Rajasthan. That to be state of what? Rajasthan. So it is the state of Rajasthan from where the monsoon retreat starts, and Odisha is the last state from the monsoon lastly starts to withdrawal, or the last to withdrawal. The first to withdrawal, it would be Rajasthan, and when it comes to the last to withdrawal, that would be your Odisha. So this is the things you need to remember. Then the northeast monsoon, obviously Tamil Nadu, Kerala is a southern part of Karnataka, then your southern part of Andhra Pradesh. ये सब जगह को वर्षा अधिक हुए. नॉर्थ ईस्ट कहले रिट्रीटिंग मॉनसून अधिक हुए ना, रादर देन आम कहवा राइट. तेणुकर कि ऑल इज सो 4 it would be what? 4 would be the option. Now comes to 5. Question number 5. Question number 5. Malwa Plateau is drained mainly through which of the following river? Malwa Plateau drained mainly by try करो. Malwa Plateau. Option A. Malwa Plateau is mainly drained by which of the following river? Whether this is Chambal and its tributary, whether it's going to be Godavari and its tributary, whether it's Krishna and tributary Subarnarekha. See, Subarnarekha is in Odisha, so that does not comes in but western part, so that would be automatically cancelled. Krishna is again cancelled, Godavari is again cancelled, so obviously it would be what? So Malwa Plateau, when it comes to the Malwa Plateau, the only river that lies, that 5 number A, and the 5 number A has been given like Satru, Lakshmi, Samir. So these are the guys, they have given the 5 number A, बहुत बढ़िया. So Malwa Plateau तुमने जानछो, right? ये बहुत ही important थिला. एटा आमे कहबा गुजरात is a part of Gujarat, and आमे कहबा कोठी तमन मध्य प्रदेश. ये part रा आसी जाउछ. Now comes to question number 6. With reference to the Great Indian Desert, it is an example of the tropical desert on the western margin of the continent. Option 1. Option 2. The desert climate is influenced by the presence of Aravalli and the ephemeral stream like the Luni and the Ghaggar drainage part of this desert. Ephemeral अर्थात कौन मुझे कही दे, when it comes to the ephemeral, it's meaning the seasonal river. That means the river that does not, I will not say seasonal, simple when it comes to the ephemeral. The ephemeral meaning that if a river does not drain directly to the any large water body and it finishes itself on the land, then we will call it the ephemeral. ताको हमें कौन कहवा ephemeral. Ephemeral रो meaning कौन कहली, कौन सी गोटे river जदि से land रो origin है कि land रे ही खत्म ही जाउची, ताको हमें कहवा ephemeral river. Yes. And as again I will urge everyone, okay, please cooperate this 1 and 2 days, so that I will have the live session at the morning AM from my village, and when I back to the city, then I will have the face वाला आपका जो वीडियो आता है फेस वाला यूट्यूब सेशन, वो वाला हम फिर ले लेंगे, राइट? अभी के लिए फ़िलहाल प्लीज़ cooperate, and then we will come back. I will come back and I will have the same this what videos that I do take. तो एथरे जदि हम देखा एफिमेरल्स जोटा तमरो रही, एटा तो आम एफिमेरल्स मु कहथली इंडिया इज हैविंग ओनली एफिमेरल रिवर, दैट इज द लूनी रिवर. दैट इज व्हाट? लूनी रिवर. Okay, so that one is correct. Ghagra also
that is Ghagra also, not Ghagra. Ghagra is a part of Ganga system. Then desert climate influence through the Aravalli, बिल्कुल এটা applied based. ଯେତେବେଳେ तुमको applied based question आସୁचे ना, don't let it go. When it comes to the second वाला option तुम देखो 6 number से कौन कहछि desert climate, right? The desert climate is influenced by the presence of Aravalli. Obviously that will be correct. सेटा correct हबो ही हबो, right? That would be correct. चलो फिर next time जीवा. Okay, next question number 7. फटाफट आम देखा क्वेश्चन नंबर 7. Questions number 7. Question number 7. Match the following mountain ranges with their correct characteristics. Purbanchal, the extension of Himalaya into the northeast. Aravalli, the oldest fold mountains in India. Vindhya, the composed mainly of volcanic basaltic rock. Satpura divides Narmada and Tapti. Characteristics is talking about. It's a easy one. It's a easy pick. Try kara hijbo. Yes, Lakshmi Satru is going for A. 7 number. Lakshmi is going for D. Anita is going for A. अच्छा देखिए देखो पूर्वांचल is the extension of Himalaya. This is correct. ताहले Aravalli is the old fold mountain of India. एटा भी ठीक अच्छी 1 and 2 तो correct हबो ताहले. Vindhya range is composed volcanic ना. Vindhya रे तमरो volcanic basaltic आसीबो नहीं तो 3 got wrong. तो जेतले तमे 3 को भूल कर दउची तो तमरो आंसर 1 ही बाहरिबो ना. जोटा तमे देख लक्ष्मी हरिका जो मैंने बाकी मैंने जो आंसर देछ जो मैंने डी देछ जेमती लक्ष्मी डी देछ बाकी समस्त तो ये देछ देख यू मु सब कही यही भाया क्वेश्चन जमी 7 नंबर क्वेश्चन आम डिस्कस करुचे यही भाया क्वेश्चन को जो आम डिस्कस करूना यही भाया क्वेश्चन को जो आम डिस्कस करी थाउ प्रथमे मु तुमको कही कि कोटा करेक्ट नुह ताकू पिक कर कोटा करेक्ट ताकू पिक करनी कोटा करेक्ट नुह कोटा करेक्ट नुह है सेटा हूँ तुम से कही देख आमर केवल बासाल्ट कौटी देखा दैट वुड बी द डेकान प्लेटू आमर केवल बासाल्ट कौटी देखा डेकान रे बासाल्ट वुड नॉट बी देयर बाकी आमर पेनिनसुला इंडिया रे सरफेस रे बासाल्ट रेयर देखा जाए सो दैट इज वाई आंसर वुड बी ए 7 नंबर नाउ कम्स टू द 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 once again Jai Jagannath and good morning everyone to the platform, right? Which one of the following physiographical division of India is known as the black soil region and significantly production of cotton? This one is easy pick to all. I will say it's an easy pick. It's an easy pick. Everyone should answer. Which one of the following region? Is it northern plain, peninsular plateau, coastal plain, Himalayan region? Right, is fine to all. Yes, बहुत बढ़िया समस्त कर परिवा को तक ही जीवन अच्छी जी. राइट बहुत बढ़िया तो समस्त बहुत बढ़िया आंसर देछ 8 नंबर तो ऑब्वियसली हम कहबा ब्लैक सॉइल विल बी हियर दैट इज द पेनिनसुलर पार्ट 8 नंबर तो राइट आंसर इज समीर अनीता लक्ष्मी सुजाता शत्रु राइट एवरीबॉडी इज गोइंग एंड राइट आंसर बहुत बढ़िया तो ये थला क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर तुम मैंने जो देछ और सेटा करेक्ट आंसर कारण हमको हिमालयन रीजन रे कौटी तुमको लोमी सॉइल भी देखा जाए माने अल्प बोधे साधारणतः आम कह माउंटेन सॉइल देखा कोस्टल रीजन आम कह आलुवियल सॉइल देखा आगे नहीं नॉर्दर्न प्लेन से भी आलुवियल सॉइल देखा चलो फिर 9 नंबर क्वेश्चन को आस क्वेश्चन नंबर 9 को आस क्वेश्चन नंबर 9
हीराकुद डैम को आम मैच करार अच्छे भाखरा सतलुज देख ए न्यूज रे तुम जो भाखरा नंगल दैट वाज आल्सो न्यूज ये जो भाखरा नंगलटा न्यूज रे भी थिला हाँ कि नहीं जदि तुम भाखरा कथा देख दैट वाज आल्सो न्यूज तेणु से कौच हीराकुद डैम महानदी भाखरा सतलुज नागार्जुन सागर कृष्णा सरदार सरोवर नर्मदा yes 9 number 9 number D is Lakshmi is going for D, Satru is going for all, Sujata all, Samir all. बहुत बढ़िया इसे देखा ये थिला हमर भाखरा सतलुज उपरे बे न्यूज रे थिला महानदी समस्त जानछ एंड सरदार सरोवर समस्त जानछ राइट जोटा नर्मदा उपरे ता पे बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चलथिला एंड नागार्जुन सागर कृष्णा उपरे तो ऑल इज करेक्ट. Now comes question number 10. Question number 10. बहुत बढ़िया. Now comes to question number 10. Question number 10. Question number 10 try कर देखो question number 10 ही जीवो right. Question number 10 D कहूची Anita, Satru is going for D, Lakshmi is going for D, Sujata also going for the all. देखियो ताले कौन कहूची से question number कितने नंबर में देखिए 10th. With reference to the Indian monsoon system, which of the following factors are responsible for its origin? The differential heatings of the land and sea, that is also correct. The shiftings of intertropical convergence zone, that is also correct. Tibetan plateau, सेटा में कही परिवा jet stream, all is the answer. बहुत बढ़िया. That's what all is the answer. बहुत बढ़िया. That means all is the answer. सेटा jet stream जोटा से कही ना ठीक अच्छे ना को जेट स्ट्रीम दरकार नहीं जोटे शत्रु पचारुच कि वेदर दैट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कि से आमर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम किसी नहीं से तो हमको मेंशन करनी ना तुमर दीटा जाक जेट स्ट्रीम तुम लिख तुम गोटे कहीं भावुच गो फॉर द बोथ जेट स्ट्रीम. वॉइस इज फाइन टू ऑल राइट. वॉइस इज क्लियर एवरीवन. नाउ वी विल कम्स टू 11 number. 11 number question number 11. The Konkan coast is narrower as compared to the Malabar coast, primarily because of what? But the map, यदि तुमको पचारिबो कि which jet stream impacts more, obviously that would be the eastern one. Question number 11. The Konkan coast is narrower as compared to the Malabar coast, primarily because of what? That is also plays part. जोटा तुम कौच अनिता कि सब ट्रॉपिकल्स वेस्टर्न जेट स्ट्रीम सेटा मध्य इम्पैक्ट करे. The Konkan coast, that means the western Ghats are closer to the coast in the Konkan region. The river delta occupies the larger part of the Malabar coast. Then the Malabar coast experience high rainfalls. Which of the following is the region? हाँ ट्राई करो. ए हबो. So answer would be A. कारण Konkan coast is narrow as compared to Malabar coast एथिपाई because the western Ghats are close to the Konkan जगह पूरा पाखरे अच्छी as compared to जदि आम देखा मालाबार पाखरे टिके दूर रे अच्छी तो यहाँ पाखरे अच्छी से Konkan coast जोटा तुम रही यहाँ पूरा पाखरे जमी आम गोवा कथा नहीं जाओ देन यू टेक इट कर्णाटक कथा नहीं जाओ
यू टेक इट महाराष्ट्र कथा नहीं जाओ एटा टिके पाखरे अछि बट व्हेन इट कम्स टू द केरला केरला रे जो रिवर गुडा अछि बिकॉज ऑफ द रिवर से टिके कोस्ट दूर रे ही अछि देन 12 नंबर क्वेश्चंस then we will comes to 12 the dunes in Himalayan region are what the dunes in the Himalayan region are what हाँ 12 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर बहुत बढ़िया आंसर देते समझते अनीता समीर everyone now comes to question number 12 the dune in Himalayan regions are the glacial valley formed by erosion longitudinal valley between the parallel ranges faulted through and the remnants of the old volcanic activities is an easy pick आराम से करि परिबो dunes जमती हमर there are dunes बोली कहछे they are exactly dunes not dune they are the dunes there are dune Lakshmi is going for B Sujata is also picking B Satru is picking B देखो जोठी हमको देखिया पड़े जेठी लिखा है से कोन the glacial valley these are dunes are not the glacial valley dunes are not glacial valley they are the depositional features and ताले कहबा यार parallels they are what longitudinal valley between the parallel ranges जेमती तमे देखिबो कि हमरो मिडिल हिमालय ग्रेटर हिमालय दीटा भितर ड्यून्स अछि तो डून्स बा हम जाकू कहछु मु तो ड्यून कहू देछु बट तम माने डून बोली कहबो एटा बाय डिफॉल्ट सेमते ही जाउछि गटे तो डून्स आर बेसिकली मीन longitudinal valley तो डून्स केमती फॉर्मेशन हेइ थाए बिकॉज ऑफ ड्रेनिंग ऑफ दैट लेक्स the glacial sediments and the sediments is bring what by the streams that would be deposited and over the course of times the draining of water from that water bodies manakuru drain heiki kon heithae ko seta colons heiki that will cemented to form a certain kind of landform jota ki flat of thae and also longitudinal to seta kom ko to answer 2 is correct one 12 रे जदि हम देखिबा आउ किछि हेइ परिबो नाही ऑप्शन को जदि हम देखिबा राइट तो दैट वुड बी करेक्ट आंसर जदि कहबो Samir also right now comes to 13 number question 13 number question first go through this one which of the following rivers form estuary while entering the sea it's a Narmada Tapi Mahanadi and the fourth one is Krishna oh ebi to tamane buji parto because Mahanadi and what Krishna you know and this is easy pick to all this one is easy pick to all is the 13 one which of the following rivers from the forms estuaries while entering the sea whether it's these two options Narmada Tapi Mahanadi or the last option Krishna then you comes to the select answer 1 and 2 1 and 3 2 and 4 and all yes it would be 1 and 2 only Narmada and Tapi Mahanadi and Krishna they are the being eastern flowing rivers so that means question number 13 jodi हम देखिबा Mahanadi and your Krishna being the eastern flowing rivers they are also forming both delta and estuary and they are forming one of the largest delta Mahanadi delta the second largest delta of India then it comes to the Krishna and Godavari delta the largest delta of India obviously that would be your Sundarban and that's why the answer 1 because you know कि eastern flowing rivers जो हमरो थाए eastern flowing river does not forms any जोटा does not form बोली कहिबिनी only I would say 8 then we will comes to 9 now comes to 14 number question 14 number question 14 number question try करो question number 14 which of the following is correct sequence of increasing age of geological formation found in India try करो हेइजो
14 नंबर से कही इंक्रीजिंग एज इंक्रीजिंग एज डिक्रीजिंग कहनी इंक्रीजिंग गुड इवनिंग सुश्री क्वेश्चन नंबर 14 तुमर काली भी मॉर्निंग रे रहिबो 7 AM सेशन देन आफ्टर टुमोरो पर आम नॉर्मल सेशन जमती नौ इवनिंग 7 AM रे सेटा ही नबा so only 2 days you have to tolerate as I have mentioned कि I have to take classes from the home from the village is coming fine to all great okay so Samir is saying SB S the oldest rock जदि देखिबा that would be the Archean rock which would be followed by the Dharwar Gondwana and Deccan ताकू जदि हम opposite करदवा उल्टी दवा then that's going to be what your Deccan Gondwana Dharwar and Archean so option B is going to be the correct one because the age will increase from that here from the Deccan Trough because Deccan Trough what just it forms when the Proto-Himalaya was forming as the Proto-Himalaya was forming that time the Deccan Trough formed and that means I would say it would be around 120 million it would be around what 120 millions that Deccan Trough formed but when it comes to Archean age that would be 4 billion that would be lagbhag 2 to 4 billion so that is the oldest rock so that is why then it would be Gondwana that comes Gondwana that would be 300 it would be 250 to 350 Gondwana then Dharwar rock system that would be around 1 billion so see Deccan Plateau is only 120 million Dharwar 250 to 350 Gondwana 1 billion आसपास सॉरी एक मिनट थर्ड सेकेंड ऑप्शन कौन हाँ तुम गोंडवाना कते हो 250 350 धारवाड़ लगभग 1 बिलियन धारवाड़ा हूँ कौटी कर्णाटक देखा द ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड तो बी इज द करेक्ट आंसर चलो फिर 15 question with reference to the Andaman and Nicobar they are the elevated portions of the submarine mountains they are located at the meeting place of India and Burmese plate they are volcanic in origins and have no coral formation 15 number question 15 number A okay देखिबा ट्राई करो 15 नंबर ए कौच यस राइट आंसर वुड बी ए कारण देख तुम जोटा लिखाई ना दे आर वॉल्केनिक ओरिजिन हैव नो कोरल फॉर्मेशन बट सर्टन आइलैंड्स आर ऑल्सो देयर द कोरल आइलैंड्स आर सर्टन नो एविडेंसेस दैट वुड बी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नो मीन्स बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट as it comes to the extreme one so that is why you have to delete it you have to cross it सेथिपे आमे कहिबा it's going to be 1 and 2 now comes to the 16 question number 16 question number 16 with reference to the Indian rivers consider the following pairs Brahmaputra antecedent Ganga consequent Chambal superimposed कोशी meandering river बढ़िया क्वेश्चन एटा देखो
ओपीएससी थारे एमती क्वेश्चन पचारि तेणु तुम मैंने ये सब क्वेश्चन मध्य जानवा दरकार। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन। सिक्सटीन ऑल कौची 16 is all by शत्रु कौची इट्स ऑल। देखिए ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट बिल्कुल सत कथा मु कही एनी रिवर कमिंग फ्रॉम टाइबेटियन प्लेटू ओरिजिन होची ताकू कहबा एंटीसीडेंट्स बाय डिफॉल्ट बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन किसी अलग थाए। एंटीसीडेंट रिवर्स र मीनिंग होची द रिवर व्हिच ओरिजिन्स प्रायर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द फीचर्स राइट। सेमती हिमालय फॉर्मेशन हवा पूर्व कौन रिवर जदि हिमालयन रीजन रे थिला ताको हम एंटीसीडेंट कहबा। गंगा इज कन्सिक्वेंट आम एथि कौचे कना जदि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हला पर कौन रिवर होची देन ताको आम कहबा सबसिक्वेंट। तापर सो कन्सिक्वेंट रेसिक्वेंट ये सब आसी जाइए। अच्छा देखो कोसी गोटे मियांडरिंग रिवर। अच्छा मत कह बट कोसी कोसी इज ए मियांडरिंग रिवर। हाँ कोसी तो मियांडर करुच्ची नो डाउट। कोसी कौन करुच्ची मियांडर करुच्ची तो कोसी भी गोटे मियांडरिंग रिवर बट एक्चुअली मियांडरिंग रिवर गोटे स्टाटस नुह बट आम कहीपर द रिवर ऑल्सो मियांडरिंग सुपर इम्पोज्ड अर्थात कौन गोटे लेयर को काटिकी से आ गोटे लेयर उपर जाउछि। यस सो आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑल क्या यहाँ कोसी की कहुए सौरभ बिहार भी कहुए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट सौरभ बिहार एंड दैट इज वाई इट वुड बी meandering river also correct। चलो फिर आज में 17 now we will comes to 17 next we will comes to 17 now 17 which of the following physiographic divisions of India is considered the youngest in terms of geological terms? Seventeen. Number B. 17B. Susri is going 70C. Say कुछ youngest कही it's not Himalaya. It would be what? It's not Himalaya. 17B कौची इंडो गैंगेटिक प्लेन किए कौची शत्रु कौची समीर कौची। अच्छा मत कह जो 17 नंबर कोस्टल प्लेन टाको किए भूलीगला। हाँ दीपिका इज सेइंग राइट आंसर इट्स ए बट इट शुड बी नॉट हिमालय सॉरी इट शुड बी डी। डी किए देइछे आंसर डी कहीं देइने आंसर डी वुड बी द आंसर डी विल बी द आंसर कि रहइबो। से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन फिजियोग्राफिक डिवीजन रे कौन गैंगेटिक प्लेन आसुनी कि कोस्टल आसुनी कि आसुचे ना तो ओबियसली दैट वुड बी कोस्टल प्लेन आंसर तुमर डी हम डी नहले बी को जीव ए आउ सी तो बिल्कुल भी नुह कारण मु तुमको कहूँ शुण हिमालय फॉर्मेशन हैला पर गैंगेटिक प्लेन हैला। हाँ हिमालय फॉर्मेशन हैला पर गैंगेटिक प्लेन हैला कि नहीं मत ये कह जो 17 नंबर में सॉल्व करूचे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तापर कौन है डिप्रेस्ड जो गोटे डिप्रेस्ड एरियाटा जाको हम कहूँ फोर फ्रंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय द फोर फ्रंट विच फॉर्म्ड बिफोर द हिमालय दैट वाज गॉट फिल्ड एंड टू फॉर्म द टू गिविंग द शेप ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन ताले सेटा ही परिबो। तापर कोस्टल प्लेन हैला तो आंसर कौन हम कोस्टल प्लेन हम कहीं हम हिमालय को जीवा
Obviously it would be D. Then comes to next. Is it fine to all? All fine now? All fine? Chale? Is it fine to all? Samir? Is it fine on? All? Everyone? Okay, chalo. Then 18 number question answer the 18. C. Okay, now 19 number question. Question number 19. Question number 19. Right. Question number 19 देखी दियो से को जी आउथर ऑप्शन देखा which of the following is true about the Western Ghats? They are continuous and higher than the Eastern Ghat. They act as a climatic divides obstructing the southwest monsoon. They contains high peaks in the peninsular. First option टा होची continuous. They are continuous than the Eastern Ghat. Question number 19. D is right answer. So D is the right answer करना तो मन जांचो कहना ये किसी मेजर रिविजन नहीं जी ताको फ्रैगमेंटेड करिवो सेट में दैट वाज इज करेक्ट एंड कंटेन हाई पिक्स इन द पेनिनसुलर ओब्वियसली आम सेटा मध्य जांचे तमर जेमती कालसुबाई कथा नहीं जाओ यू टेक इट बट आम कहबा नीलगिरी कथा नहीं जाओ अगस्त्यमाला कथा नहीं जाओ अनामलाई कथा नहीं जाओ राइट बाकी कर्नाटक जो इंपोर्टेंट पिक्स रही गुरु महेश जो सॉरी गुरु महेश कहूँ आमर कुद्रुमुक्स वगैरह कथा नहीं जाओ देन 20 सर ऑफ बेंगल दामोदर को कहीं कहा जाए 20 20 number. The Damodar River is often referred as the Sorrow of Bengal. Why? It's because of the frequent flood and devastation. It dries off completely during the summer month. It changes its course frequently and causes the excessive soils erosions in the delta region. Obviously, 1 is the right answer. 1 is given by Satru, Samir, Susri, and some of them. That is correct, right?
Lakshmi also. Now comes to what? 20. The granite silt. Which of the following region is also called as the granite silt? Granite silt. Hmm. 21C. Granite is Malwa plateau kochi Meghalaya Chutnagpur Aravalli. Chutnagpur plateau है वो ना granite silt. It would be Chutnagpur plateau. कोड देखा जो Chutnagpur plateau B. Answer should be B. Malwa केमती हबो? Malwa plateau is Chutnagpur होटी one of the oldest part ना silt. Silt ର meaning कौन सुनो? Silt ର meaning होची one of the oldest part of the earth जेमती Canadian silt. सेमती छोटनागपुर सिल्ट जोटा रही तुमर सिल्ट्र मिनिंग हूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट जोटा कि वेदरिंग इरोजन होगी सेटा गोटे फ्लैट सरफेस लगभग कम कहवा कन्वर्ट हो जाइए सेमती दुनियार वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिल्ट कौटी जी तुमको पचार तुमको कैनेडियन सिल्ट 22 which of the following is not correct characteristics of Deccan Trough? It's not कही it's not कही ध्यान से सुनो it's not कही से 22 नंबर 22 से not कही टुमोरो सेशन जोटा मॉर्निंग एम रे रहिबो सेतरा में ओडिशा ज्योग्राफी रो 30 क्वेश्चन डिस्कस करबा केते 30 क्वेश्चंस ऑफ ओडिशा ज्योग्राफी सो दैट 30 क्वेश्चन ऑफ ओडिशा ज्योग्राफी मध्ये बहुत हेल्पफुल करबो रहिबा 22C से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आउट द डेकान ट्राफ देख डेकान ट्राफ को एस फिजर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत थोड़ा मु कही डेकान टाइप रे फिजर वॉल्केनिक इरप्शन हेइथला बोली बेसाल्टिक रॉक मु तुमको कही ओनली रीजन ऑफ इंडिया जोटी बेसाल्टिक रॉक देखा जाए सेटा होची तुमरो डेकान ट्राफ ऐसे गोंडवाना रॉक केमती हबो गोंडवाना रॉक तुम तो ऑलरेडी कहते इट्स अ डेकान ट्राफ देन हाउ इट बिकम्स द गोंडवाना रॉक बिकॉज गोंडवाना इज डिफरेंट देन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात that would be there so C is the correct answer then 23 last 2-3 questions is left एटा बुझा पड़े समस्त ना का डाउट अछि anyone is having doubt anyone is having doubt Samir C 23 consider the following natural vegetation types and their dominant location 23 the tropical evergreen forest Andaman and Nicobar, tropical deciduous Madhya Pradesh, thorny and scrub Rajasthan, mountain forest in the Kashmir region.
Hmm. 23 all बहुत बढ़िया great great बहुत बढ़िया right everyone बहुत बढ़िया then the last sorry ଆଉ ଦୁଇଟା क्वेश्चन ରହିଛି 24 25ଟା क्वेश्चन ଆମର टोटल ରହିଛି ଆଜି with reference to India drainage system consider the following system the river origins from the Amarkantak plateau flow through both Arabian Sea and Bay of Bengal the Ganga river is both antecedents and consequence in character Chambal rivers is notorious and its ravines formation बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छी देख बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भाया क्वेश्चन कले ही तुम कौन कहल जो आइडियाटा बढ़ी बढ़ी जीव कि हाँ 24 नंबर क्वेश्चन कारण आम देख टीचर जो पढ़ाते ना ऑल द एंगल्स आर कोठी ना कोठी कवर हुए ना कोठी ना कोठी छोट मोट एंगल छुटी जाए एंड दैट एंगल विल बी क्रॉस्ड वेरीफाइड एंड इम्प्रूव्ड बाय सॉल्विंग द MCQ जमती आम कह ये कौन हम से कहे रिवर्स ऑरिजिन्स फ्रॉम अमरकंटक रिवर अमरकंटक रु दामोदर भी होची नर्मदा भी होची दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट द नर्मदा रिवर्स इज गोइंग टू द वेस्ट एंड द दामोदर रिवर इज गोइंग टू द ईस्ट दैट इज वाई बोथ बे ऑफ बेंगल्स एंड अरेबियन सी इज द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर गंगा रिवर बोथ देख ये ध्यान से देखो दीटा जो स्टेटमेंट 1 and 2 इज वेरी डिफिकल्ट राइट तो मैंने समझते गुड आंसर देइछे डी इज द करेक्ट आंसर बट द डिफिकल्ट इज दैट the river origin from the Amarkantak is Narmada. The river origin from the Amarkantak is Damodar, then Sank, Quail. These are the rivers also. So, so answer correct है Ganga कही both antecedent and consequent. Ganga is not consequent, but antecedent ताले कहीं लिखा है तार जो tributaries. Some of the tributaries are antecedent. That is important. Like Sarda. Like Sarda, जहाँ को हमें कुछ काली काली is antecedent. Kali is about antecedent. Like Gandak is antecedent. That is why. Thank you, Susri madam. Next, Chambal river is notorious. कौन पाई मु कही ravine formation करे कौन ravine what ravine formation करे से that is why important ravine मु कही दुनिया सब हाईएस्ट ravine कोठी देखा जाए डाकोटा स्टेट ऑफ यूएसए रे कही ravines are what badland topography ताको कौन कह badland topography right एटा मध्य मन रखि ताको कौन कह badland topography कह and the last one 25 which of the following states is not a part of seven sister of northeasterns of India it's a easy one seven sister party नुह 25 number questions yes Sikkim is the correct answer yes Sikkim is the yes the right answer would be that one तेणु ये आज सेशन थिला विदाउट फेस थिला केना बिकज मु घर नौ सेसनटा तेणु जेहेतु मत घर सेसन नापी पढ़ुची विदाउट फेस रे मत नापी पढ़ुची थैंक यू लक्ष्मी फॉर योर काइंडनेस राइट तो आज आई हैव टू टेक द सेशन फ्रॉम द होम दैट मीन्स विलेज तो ओबियसली सब इंस्ट्रूमेंट धरिकी आसवा टिके डिफिकल्ट होता है तेणुक ये सेसनटा हूँ विदाउट फेस एंड मो पेनटा भी आने भूली जाइए लिखापी से लिखि भी पारूनी बट थैंक यू एवरीवन फॉर योर टॉलरेंस एंड पेशेंस एंड आउ काली गोटे दिन खाली मुझे सकाल 7टा ରୁ 8टा तापर आई विल बैक टू द सिटी देन वी विल हैव नॉर्मल सेशन जमती हुए सेमती हम ओके पीडीएफ मुझे
जो तुमको कहुई पीडीएफ कौटी दिहब टेलीग्राम चैनल रे देदेवी मु ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रे देदेवी पीडीएफ ओके ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन देन सी यू देन टुमारो मॉर्निंग 7 AM इनफॉर्म एवरीवन राइट 7 AM तापर जमती आम इवनिंग रे नौ सेमती आज यूजुअल आम इवनिंग रे ही नबा राइट सो दैट वुड बी देयर थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू एज वेल थैंक यू ऑल